Sir, shall we start? Yes, please go ahead. Honorable Director IIT Patna, Associate Dean Student Affairs, other dignitaries, faculty and staff colleagues, and dear students. Good afternoon, everyone. On behalf of the Cultural Committee, I welcome you all to today's event that celebrates Gandhi Jayanti, the birth anniversary of Father of Nation, Shri Mohandas Karamchand Gandhi. On this occasion, we pay homage to the immense contributions of Gandhiji to freedom movement. Another national luminary, Sri Lal Bahadur Shastri, was also born on 2nd October 1904, making this day more special. On 15 June 2007, the United Nations General Assembly voted to establish 2nd October as the International Day of Non-Violence. Henceforth, this day has been marked with celebrations across the world to disseminate the message of non-violence, including through education and public awareness. I would now request AD in Student Affairs, Professor Smriti Singh, to deliver the welcome address on the occasion. Thank you, Dr. Ajay. A warm good afternoon to Honorable Director, IIT Patna, Professor T.N. Singh, my associate dean colleagues, faculty members, members of the staff, dear students, and all the family members who've joined online for this program on October 2nd. Truth and non-violence are the two words that we always associate with Mahatma Gandhi. But sadly, it is these two words which are kind of missing from our lives. Instead of saying truth, the first instinctive thing that comes to everyone's mind is actually what would be a lie. So in the 21st century, and as we are, again, this is the first decade of the 20s, let us make a promise to ourselves to uphold the values that Mahatma Gandhi upheld in his life and has been preached through the education system, through our value system, through our traditional knowledge. Apart from Mahatma Gandhi, this day also belongs to Lal Bahadur Shastri. Shastri ji brings us closer to our roots. The farmers that we see around, the food that we eat, everything has the base in what he said, Jai Jawan, Jai Kisan, which later on Vajpayee ji added it and made it Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. So it is the amalgamation of all the three that will make India the leader in the coming years. And with the students that we have with us, with the young blood that we have around us, we are sure to make progress. So with these words, I welcome each one of you to this short program that we've put up for October 2nd. And I thank all the faculty members and staff members associated with the cultural and technical team and PIC Cult and Tech, and Dr. Ajay Thakur, who's PIC in charge for today, for putting up this program. I wish everybody enjoys the show. Thank you. Thank you, ma'am. So I would now like to request our Honorable Director to convey his message on the occasion. Sir, we may have to unmute, I guess. Is it okay? Yes, sir, it is perfectly fine. So good morning to all of you. Dr. Smriti Singh, Associate Dean, Student Affairs, Professor S.K. Samanta, Chairperson, Cultural and Technical Affairs College, AJN students. On 152 second birth anniversary of Mohandas Karamchand Gandhi, we have assembled to pay our best tribute to him. With this, another equally important and dedicated for the nation, Sri Lal Bahadur Shastri ji. Both the legendary had brought India into the independence
and given a message to the society that how this country will run, how the society will go ahead with adopting each other problems. Many of both these legendary has always asked the people, decision makers and administrators, that you can think about the person who is sitting in the last in the society. If that program will benefit it for that, forget about the rest will get their benefit. I think the Gandhiji, which has given us the message, the cleanness is godness. Once you have the clean, you are closer to the God. And I think now it is a time when the whole country from the last few years making it a festival for our cleanness drive on the 2nd of this October. And we are trying to clean this, our country, not the cleanness of the terms of the physical, I think. We have to not only physical, it should be the spiritual and mental together. So we should not clean only the road, we can clean our heart and mind both. And to be kind enough to the society who needs your support, and they are looking for those who have something, they can offer them, they can provide them the help, they can provide them the cooperation so that they can also feel to be the proud Indian. I think this is the right time that, as the madam said, if the truth will be missing link with the life of these people in all sphere of the people. We cannot blame only one section or the other section of the people that they have lost their truthness, but truthness has gone and almost gone to this all strata of the people. It is a right time to we can revive it, we can adopt it, we can practice it so that our country can move and then again become the super power, or you can say the leader, not in the sense of only to suppressing someone, the leader with this what we call सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको अच्छी सुविधा मिले, सबको सम्मान मिले, सबका व्यवहार एक दूसरे के प्रति उचित रहे, ऐसी संभावनाओं के साथ हमें राष्ट्र पिता को याद करना चाहिए। उनको आज क्या मुझे लगता है कि हमें गांधी को थोड़े पढ़ने की आवश्यकता है। आज देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बिना गांधी को पढ़े, बिना शास्त्री को पढ़े और समझे उनके ऊपर वक्तव्य देते रहते हैं। मैं खास करके अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली गो थ्रू द एटलीस्ट वन बुक और टू बुक ऑफ महात्मा गांधी. They are in very short books, small books. Then you will find that what was this difficulty he faced while adopting the truth in his life, from the school days to his last death date. So, likewise, you can see this Shastri. He was so simple. He is the example of this simplest people. How a person of the posting that the higher position, I did a simple man, simple in behavior, simple in character, and simple to understand the social problem of this country. So I think it is a right time that we should adopt a truthness, we should adopt their spirituality they have given, and the respect to each other. In the society, we have to respect to each other. That are the message I think today is much, much relevant. And I think Gandhi is still a very, very relevant in today, not in the past. And I think in the coming future also, people are looking for the Gandhian type of thoughts, Gandhian type of the engineering, which can resolve all outstanding issues in the society and resolve all the conflicts. So I again congratulate all of you for participating in such a program.
though it is not possible from this face-to-face, but we are in online, but the message should be very, very clear. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words and for your message on the occasion. Definitely, it will encourage many of us to read Gandhi and Shastriji. So now we will begin with today's recorded video session. So we are trying to start the beaming as soon as possible. So this recorded video is based on the performances by IIT Patna fraternity, students, as well as family of faculty and staff members. मुकुटमणि IIT पटना विश्व का मुकुटमणि IIT पटना सदा तत्पर सदा जागृत पीछे न जाने हटना विश्व का मुकुटमणि IIT पटना 2008 अगस्त को जग ने कहा जी बधाई हो शिक्षा नभ का ध्रुव तारा IIT पटना विश्व का मुकुटमणि IIT पटना नालंदा विक्रमशिला जिस धरती की रही माला उस बिहार का और एक सुमन IIT पटना विश्व का मुकुटमणि IIT पटना चाणक्य अशोक चंद्रगुप्त महावीर और तथागत आर्यभट्ट आशीष धन्य IIT पटना विज्ञान तकनीकी अंक शास्त्र मानविकी सर्वशास्त्र परंगत IIT पटना हमने ले ली यह प्रतिज्ञा ईश्वर की भी यही आज्ञा होगा चरम प्रतिष्ठा पर IIT पटना सदा तत्पर सदा जागृत पीछे न जाने हटना विश्व का मुकुटमणि IIT पटना विश्व का मुकुटमणि IIT पटना
सुप्रभात, मैं वैभवी ठाकुर कक्षा 4 केंद्रीय विद्यालय IIT पटना। गांधी जयंती। गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। इस दिन को विश्व अहिंसा एवं गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। इनके पिताजी करमचंद गांधी एक दीवान थे। इनके माताजी पुतलीबाई का धर्म के प्रति काफी झुकाव था। इनका विवाह केवल 13 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने जीवन के सिद्धांत बताए हैं। अहिंसा, ब्रह्मचर्य। इन्हें हमारे भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। ये एक महान राजनीतिक और समाज सुधारक थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई। वह रे फकीर खूब करामात दिखाई, वह रे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। Subramani from KV IIT PATNA. I am going to perform Bharatanatyam dance choreography by Guru Srimati Abhinaya Raman, Colors Rupa Academy, Chennai. விஷமக்காரக்கண்ணன் பொல்லாத விஷமக்காரக்கண்ணன், பொல்லாத விஷமக்காரக்கண்ணன். வேடிக்கையாய் பாட்டு பாடி விதம் விதமாய் ஆட்டம் ஆடி மாடி பொருள் இல்லை செய்து கோபால கிருஷ்ண விஷமக்காரக்கண்ணன், விஷமக்காரக்கண்ணன். நீலமேகம் போல இருப்பான், நீலமேகம் போல இருப்பான், பாடினாலோ நெஞ்சில் வந்து போடி இருப்பான். ஓலப்புள்ள முதலுதி கோபிகளை கள்ளம் ஆடி கொஞ்சம் ஒரு வெள்ளை தாடி என்று கலாட்டம் ஆடும் விஷமக்கார கண்ணன், விஷமக்கார கண்ணன். பக்கத்து வீட்டு பெண்ணை அழைப்பான், பக்கத்து வீட்டு பெண்ணை அழைப்பான், மூக்காரி ராகம் பாட சொல்லி நம்ப கேளுப்பான். பக்கத்து வீட்டு பெண்ணை அழைப்பான், மூக்காரி ராகம் பாட சொல்லி நம்ப கேளுப்பான். எனக்கு அது தெரியாதென்றால், எனக்கு அது தெரியாதென்றால் நெக்கூறுகள் கிட்டே விட்டு, அவளை நெக்கூறுகள் கிட்டே விட்டு, அவள் கிறுக்கி அழும்போதை தாண்டி உட்காரி விஷமக்காரம் விஷமக்கார கண்ணன்.
வெண்ணை பானை மூடக்கூடாது, வெண்ணை பானை மூடக்கூடாது, இவன் வந்து விளங்கினாலும் கேட்கக்கூடாது, இவன் அம்மா கிட்ட சொல்லக்கூடாது, சொல்லிவிட்டால் அட்டகாசம் தாங்க முடியாது. சும்மா ஒரு பேச்சுக்கானும் திருடன் என்று சொல்லிவிட்டார், இவனை திருடன் என்று சொல்லிவிட்டார். நம்ம பாட்டி அத்தை தாத்தா அக்காசையும் திருடன் என்றான் விஷமக்கார கேடிக்கையாய் பாட்டு பாடி விதம் விதமாய் ஆட்டம் ஆடி ஆழி போலிலை சந்தன கோபால விஷமக்கார যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে,
তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও অভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও অভাগা, সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলো রে, ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি আলো না ধরে ওরে ওরে ও অভাগা, আলো না ধরে, যদি ঝড় বাদলে আধা রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, যদি ঝড় বাদলে আধা রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, তবে বজ্রা নলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে, আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। जानकीनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकीनाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु के नाहि गण्यता, संग शनिचर होठ उचेरो, जानकीनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो।
जानकी नाथ सहाय। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, चीर उतार कुमंतर प्रेरो, ताकि सहाय करे करुणानिधि, बढ़ गए चीर के भार घनेरो, ताकि सहाय करे करुणानिधि, बढ़ गए चीर के भार घनेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। जाके सहाय करे करुणा निधि, ताके जगत में भाग बढ़े रो, जाके सहाय करे करुणा निधि, ताके जगत में भाग बढ़े रो, रघुवंशी संतन सुखदाई, रघुवंशी संतन सुखदाई, तुलसीदास चरणन को चेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु परदायक तेरो, जानकी नाथ, जानकी नाथ, जानकी नाथ सहाय।
stop share and stream. Which one? So thank you so much for being here. So I would read out few quotes from Shastriji and Gandhiji before we wrap up. So in words of Shastriji, success in science and scientific work came not through the provision of unlimited or big resources, but in the wise and careful selection of problems and objectives. Above all, what is required is hard sustained work and dedication, unquote. Asking the students to follow the two most brilliant examples of Indian scientists who carried their profession for the sake of it, namely J.C. Bose and P.C. Ray, Gandhiji once remarked, to quote, "They cultivated science for the sake of it. Their researches have been devoted in order to enable us to come nearer to our Maker. I feel that we are placed in this earth to adore our Maker, to know ourselves, in other words, to realize ourselves and therefore to our destiny." Unquote. In Gandhiji's views, traditional medicines like Ayurveda and Unani had, unlike Western science, maintained a deep relationship with science and religion, body and soul, but had not inculcated the spirit of research that fired modern science and gave it contemporary relevance. And he envisioned developing these areas. Gandhiji always used to say, "Do not see evil. Do not listen evil words. Do not speak bad words." With these words, we come to an end of today's events. On behalf of the Cultural Committee IIT Patna and on behalf of Professor in Charge Cultural and Technical Dr. Sujay Samanta, I would like to present the vote of thanks. In view of constraints arising out of global COVID pandemic, we had to celebrate today's event in an online mode to reach out to the entire IIT Patna fraternity. Such an event is not possible without support from various institute functionaries. Foremost, we would like to acknowledge the support and guidance from IIT Patna administration and the 18 Students Office. The technical support from Dr. Ranjit Laha and the logistics support from National Knowledge Network team made it possible to respectively prepare and beam the online program seamlessly. We also thank members of IIT Patna fraternity, including our students and the family members of IIT Patna faculty and staff, for their gracious contributions that constituted core of today's program video. We also thank Honorable Director IIT Patna and Associate Dean Student Affairs for their kind words of wisdom and message on the occasion. Finally, we thank all of you for being such a lovely audience. Namaskar, Jai Hind.